Hello students, welcome to Evs-Board. I hope you are enjoying and also taking care of yourself. In previous videos, we have done about plants, but today we will start a new chapter. Let's tell you one thing, does only human live on the earth? No, there are human beings, different animals and plants are there on the earth. Kids, do all the animals and plants are same? No, all the plants and animals are different from each other. But today we will know about different animals. So kids, our today's topic is animals. Let's come on the topic. We see different types of animals around us. जिस तरह हम ह्यूमन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और हमारी एक अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक उसी तरह एनिमल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और जिस तरह ह्यूमन कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं, इन द सेम वे ऑल द एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। टेल मी वन थिंग किड्स, कि ह्यूमन कहाँ रहते हैं? Of course, they live in their houses as well as animals live at their own places. Some animals live with us in our homes, जैसे dog, parrot, cat, etc. इन्हें हम pet animal कहते हैं. And some are live in forests like deer, jackal, bear, lion, etc. इन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। किड्स, क्या आपने किसी ह्यूमन को फ्लाई करते देखा है या फिर किसी ह्यूमन को ज्यादा टाइम के लिए वाटर में देखा है? नहीं ना? किड्स, ह्यूमन ओनली लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं, बट एनिमल्स डिफरेंट होते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन द लैंड लाइक डियर, जिराफ, जैकल, मंकी, काऊ, बफलो, etc. और कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं लाइक फिश, क्रैब, सील, डॉल्फिन, etc. और कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं वो एयर में भी रह सकते हैं। ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। जिस तरह प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह एनिमल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लांट से हमें फूड मिलता है। In the same way, animals also give us food. Some animals give us milk like cow, buffalo, goat, etc. And some animals give us flesh, meat like fish, goat, sheep, pig, etc. कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने वर्क में हेल्प करने के लिए यूज करते हैं, जैसे डोंकी सामान को कैरी करने में हमारी हेल्प करता है। तो किड्स, आपने देखा ना कि प्लांट्स जिस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह एनिमल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो किड्स, आई होप यू अंडरस्टूड today's content and learn about different animals which are important for us. Let's go on the practice. So kids, your first question is, who lives on the earth? And your options are plant, animal, human, all of above. Correct answer is all of above. Your next sentence is all the animals are, and your options are same, different, equal, none of these. And the correct answer is different. Your next question is, which animal can live in water? And your options are dog, parrot, fish, cat. And your correct answer is fish. Your next sentence is, dash can fly in air. And your options are lion, parrot, fish, cat. And the correct answer is parrot. So kids, there is a homework for you. You have to do it yourself. And the activity is,
Name any three animals that you find near your houses. Kids, we end this video here and we'll meet in next video. Till then, bye bye.